Hi everyone, welcome back to EVS class. So today we are going to do unscrambled words and question answers in notebook. Okay, so please open your notebook, 4 number notebook, also textbook, because we are going to write question answers. So we have questions in textbook. That's why please open textbook and notebook. Okay, things around us. Our chapter is going things around us. Okay. So what is the meaning of things around us? Things means वस्तु जो हमारे आसपास दिखते हैं, like animals, plants, building दिखते हैं, window, class में benches दिखता है, blackboard दिखता है. These are all called things. Okay. So things around us either natural or man-made. ओके जो हमारे आसपास दिखते हैं या तो नेचुरल है या तो मैन मेड है. ओके सो एग्जांपल्स ए वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, रॉक्स, मेनी मोर. ओके सो इन नेचुरल थिंग्स देयर आर टू टाइप्स. वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग. ओके सो आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई विल एक्सप्लेनिंग इन लिविंग और नॉन लिविंग. ओके सो नेक्स्ट बारी आती है मैन मेड थिंग. ओके सो मैन मेड थिंग्स आर लाइक बोर्ड, बेंचेस, चेयर, फैन, टीवी, कंप्यूटर, योर फोन, माय फोन, एरोप्लेन, बसेस. दीज आर ऑल कॉल्ड मैन. सो मैन मेड थिंग किसे बोलते हैं? थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ओके एग्जाम्पल टीवी, कंप्यूटर, फोन, एवरीथिंग. ओके एक बात है मैनमेड थिंग्स को हम नॉन लिविंग भी बोलते हैं. ओके सो इवर हम वी गेट क्लॉथ्स आल्सो फ्रॉम नेचर, लाइक वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वोर, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. ओके जो हमने ह्यूमंस ने बनाया वो मटेरियल है रेयॉन. ओके जो रेयॉन है वो हम ह्यूमंस ने बनाया, रेयॉन कपड़े. बाकी हमें नेचर से ही मिलता है. ओके तो शीप गिव्स अस वूल आल्सो. ओके सो नेक्स्ट बारी आती है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके लिविंग थिंग्स मीन क्या है? जो हम हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स मूव. दीज आर ऑल कॉल्ड लिविंग थिंग्स. So examples are animals, plants, birds, insects and bacteria. Okay, these are all living things. Okay, so living things move on their legs, like humans move on their legs. Animals also walk with their legs. Birds fly with their help of wings. Okay, so that's why we are all calling living things. So non-living thing क्या है? Non-living things cannot move, non-living things cannot grow, non-living things does not need food and water, and non-living things cannot produce. Okay, so like मैं दे रही हूँ. See, this duster. Duster is non-living thing. Okay, so ये मूव करता है? नो. इट नीड वाटर? नो. इट रिप्रोड्यूस? नो. और ये कुछ नहीं करता. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. ऑल्सो दिस इज कॉल्ड मैन मेड थिंग. ओके सो नेक्स्ट हमारी बारी आती है मटीरियल्स. वी गेट मटीरियल्स फ्रॉम नेचर. ओके हम नेचर से मटीरियल लेते हैं. Some are we get some from living things and some from non-living things. जो हम मटेरियल लेते हैं कुछ लिविंग थिंग्स से लेते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से लेते हैं. ओके सो we get wood, plastic, rubber and metal. Okay so wood is used to make chair and table. Plastic is used to make comb, buckets, mugs, etc. Okay, rubber is used to make tires, gloves, erasers, and metal is used to make machine, car, ornaments, and many more. Clear? So today we are going to write unscrambled words. So first one is this one. Okay, what
becomes? Any guesses? Yes, it is nature. N-A-B-U-R-E. This is called nature. Okay. So next, G-N-L-I-V-E. Any guesses? It becomes living. L-I-V-I-N-G. This is living. Okay. So next move to A-L-M-T-E. It becomes metal. Metal is material. Metal. M-E-T-A-L. It becomes metal. Okay. Third one, K-C-O-R. Any guesses? Yes. It becomes rock. Next move to S-P-L-A-P-E-L. What it becomes? It becomes plant. Okay. So nature. This is our nature. जो हम आसपास दिखता है, plants, birds. This is our beautiful nature. Living things. We, animals, birds, insects are living things. So metal is material. Okay. So metal is used to make car and machines. Rock is natural, non-living thing. Plants is natural, living things. Okay. So write down these words. I will be back to write question answers. Okay, so I am going to write some question answers from textbook in notebook. Okay, so what is our first question? There are very simple questions. Okay, so first question is, what are natural things? What are natural things? Question mark. Give two examples only. Give two examples. Okay, so I am going to write answer. So our answer is, what are natural things? Give two examples. Okay, so things found in nature that are not man-made, not made by man are called natural things. Examples. We have to write only two examples. Okay. Air and water. Air and water. Clear?
I hope you all done your first answer. So I am going to write second question. There are 4 questions in our textbook. Okay. So second question is name any 2 futures of living things. क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 2 फ्यूचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब हम लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानेंगे? क्या है लिविंग थिंग्स? ओके, सो आंसर इज लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन reproduce, living things need food and water. Okay, so we have to write only 2 futures. Okay, so living things can breathe, and reproduce. This is the answer. Okay, so write down this. I will be back to write third question. Okay, so we are going to write third question. Question 3. What are man-made things? What are man-made things? Okay, this is the question. What are man-made things? I am going to write answer. Things that are made by man, and not found naturally are called man-made things. Clear? Okay, so man-made things को हम non-living भी बोलते हैं. ओके, सो जो हम man-made है वो कभी living things नहीं बनाते. ओके, सो living things are natural, but man-made things है वो natural से मटेरियल लेके उसका ऑब्जेक्ट्स बनाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई man-made thing is not found in nature. ओके, so complete this. Okay, so next move to last question, fourth question.
metals, plastic. Okay. There are four materials: wood, rubber, metals, plastic. Wood is used to make furniture. Rubber is used to make tires, gloves, erasers. Metals is used to make ornaments, car and machines. And plastic is used to make bucket, comb, mugs, many more.